दिस इज Sajjad और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है सेल साइकिल। अच्छा, हम सेल साइकिल का एक लेक्चर ले चुके थे, तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा आर्टिकल होगा माइटोसिस, चैप्टर नंबर 21, क्लास सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इलैबोरेट व्हाट इज माइटोसिस। Definition of mitosis is the process in which one cell divides to form two daughter cells with same number of chromosomes as in parent cell. This type of division known as mitosis. Actually इसमें होगा क्या कि जो भी सेल जाएगा पेरेंटल सेल, जब वो एक सेल डिवीजन में से गुजरेगा तो वो दो सेल बनाएगा। रीजन क्या है इसके पीछे, यानी वो दो सेल ही क्यों बना रहा है? बिकॉज सेल इज डिवाइडिंग ओनली वन टाइम। Remember that there is another type of mitotic division which is meiosis. Mitosis is actually one type of division and second type of division is meiosis. And remember that in meiosis there are two divisions. Therefore in meiosis there are four number of cells produced from parent cell. But in case of mitosis only two cells form. Mitosis occur in haploid as well as diploid eukaryotic cells. ये haploid cells में भी होगी और diploid cells में भी होगी. Keep in mind that when a haploid cell divide, they will form haploid cells. When a diploid cell divide, they will form diploid cells. Because same number of chromosomes are presenting in the next cells, which are daughter cells. So we can say that this kind of division is known as equational division. It is also known as equational division in which number of chromosomes in daughter cells equal to the number of chromosomes as in parent cell. Mitosis is also regarded as cloning of cells. Cloning means copy, identical copy, because जितने भी सेल बनेंगे माइटोसिस के नतीजे में उनका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? सेम होगा। उसकी रीजन क्या है? लेट्स एक्सप्लेन करते हैं इसको। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सेल है डिप्लॉइड। ड्यूरिंग माइटोसिस जब ये दो सेल में डिवाइड होगा तो वो दोनों जो हैं उनमें क्रोमोसोम की दाद सेम होगी। इसके लिए हम कह देंगे इट इज इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन ये जो दोनों सेल में जो क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल गया है इसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं आई, इसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं आई। क्योंकि कोई म्यूटेशन या चेंज नहीं आएगी तो हम कह सकते हैं कि सेल्स एक्चुअली क्या होंगे? एक दूसरे की कॉपी होंगे। ये दोनों सेल्स आपस में क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल सेल्स। और आइडेंटिकल सेल्स को बेटा क्या बोलते हैं? क्लोन सेल्स बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्लोनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है? बिकॉज सेल्स हैविंग सेम जेनेटिक मेकअप प्रोड्यूस इन क्लोनिंग। अब बात करते हैं phases of mitosis की। There are two phases of mitosis, karyokinesis and cytokinesis. What is karyokinesis? Division of nucleus. Karyo mean carrion से word निकला है, that meaning nucleus, and kinesis mean division. Cyto mean cytoplasm से word निकला है, cell से word निकला है, kinesis mean division. It means cytokinesis is the division of cell and karyokinesis is the division of nucleus. Remember that mitosis is a continuous process. Mitosis कौन सा process है? Continuously. But for our convenience या but conventionally it is divided into two phases. यानी हम इसको अपनी आसानी के लिए दो स्टेज में डिवाइड कर लेते हैं। एक का नाम है karyokinesis और दूसरी का नाम क्या है? cytokinesis. तो first of all we will elaborate first stage of या first phase of mitosis, which is karyokinesis. The process in which parent nuclei is divided into two identical daughter nuclei within the same cell is known as karyokinesis. It means इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बनाएगा? दो डॉटर न्यूक्लाई बनाएगा, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगा। रिमेंबर दैट इस केस में सेल डिवाइड नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए तो हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है। सेल एक ही है बट न्यूक्लियस कितने बन चुके हैं? दो बन चुके हैं। क्योंकि न्यूक्लियस दो बन गए हैं तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस क्या हो चुका है? आइडेंटिकल न्यूक्लाई में डिवाइड हो चुका हुआ है। एंड रिमेंबर दैट एट द एंड ऑफ द karyokinesis के एंड पे जो पेरेंट सेल होगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है जितने होंगे उतने ही किसमें मौजूद होंगे? डॉटर न्यूक्लाई में। तो पेरेंट सेल रिगार्डेड एज बाई न्यूक्लिएटेड। पेरेंट सेल क्या कराएगा? Binucleated. Bi mean two, nucleated mean nucleus. There are two nucleus in the parent cell.
तो दिस इज द कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के फिर आगे इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को हम जो है डिस्कस करते हैं। इन एन एनिमल सेल firstly centrioles begin to separate which are duplicated already in G2 phase of interphase. Remember that G2 phase is the phase of interphase in which all the events will occur that is required for next phase, and after G2 phase during cell cycle is the mitotic phase. तो यू कैन से दैट G2 फेज में वो इवेंट्स होंगे जो बेसिकली किसके लिए रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड है माइटोटिक फेज के लिए। एंड माइटोटिक फेज का हम आज एक हिस्सा पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, माइटोसिस। तो बेटा G2 फेज में वो इवेंट्स होने चाहिए जो हमें माइटोसिस में रिक्वायर्ड है, क्योंकि माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर बनाने थे तो उसके लिए सेंट्रियोल्स को क्या होना है, यहाँ पे डुप्लीकेट डबल हो जाएंगे सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर डुप्लीकेटेड इन G2 फेज ऑफ इंटरफेस बट are present within same centrosome, and centrosome वो पोर्शन है जहां पे बेसिकली क्या रिसाइड करते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक apparatus बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि हम कैरियोकाइनेसिस में स्टडी करेंगे, और ये किसकी वजह से होती है, दिस अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स। Three set of microtubules originate from the centrioles which were migrated to opposite pole. आफ्टर डुप्लीकेशन, जब डुप्लीकेशन हो जाती है तो सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल की तरफ क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं दूसरे पोल्स पे। एक पोल पे चला जाता है, दूसरा उसके ऑपोजिट पोल पे, और वहां जाके ये क्या बनाना शुरू करता है, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देता है किसकी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। ठीक है, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स नंबर 1, नंबर 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड नंबर 3 नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। याद रखें, first of all ester microtubules, one set of microtubules radiate outward from centrioles and form an ester. What is an ester? Remember that these centrioles will duplicated, let's suppose here are centrioles which are right angle to each other, and they will start radiating microtubules, and if microtubules are arranged in the form of radius or circular pattern, this pattern is known as ester. This pattern is known as ester. Then second, kinetochore spindle microtubules. Second set of microtubules polymerize to form spindle fibers which are attached to the kinetochore region of centromere. What is centromere and what is kinetochore? If we want to study this, this is, let's suppose this is the chromosome, and this is the centromeric region of chromosome. Each chromosome has a region that is known as kinetochore. This region is known as kinetochore. Number 3, non-kinetochore spindle microtubules. Third set of microtubules which polymerize to form spindle fibers which can interdigitate with each other are called non-kinetochore spindle fibers. They are not attached with the centromere, or we can say that they are not attached with the kinetochore region of centromere. Therefore, they are said to be non-kinetochore. These specialized microtubules including ester एंड स्पिंडल में बेटा दो है हमारे पास, एक है काइनेटोकोर और दूसरा नॉन काइनेटोकोर। इन दोनों के मजमूए का नाम क्या है, माइटोटिक अपरेटस। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोटिक अपरेटस, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोटिक अपरेटस? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। डिफाइन माइटोटिक अपरेटस एंड एलैबोरेट इट्स सिग्निफिकेंस। तो इट इज लार्जर देन न्यूक्लियस, इट इज डेजिग्नेटेड, इट इज डिजाइंड टू अटैच एंड कैप्चर क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के साथ अटैच होने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए, अलाइनिंग देम, उनको एक प्लेन पे इकट्ठा करने के लिए, एंड फाइनली सेपरेटिंग देम, फिर इक्वली क्रोमैटल मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया गया है। इस अपरेटस का नाम क्या है, माइटोटिक अपरेटस। कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. Inshallah, in the next video we will elaborate these stages, but diagrammatically this is the overview of karyokinesis. Look here, it is a cell, animal cell, and this is a nucleus, and this is a fine thin chromatin material, and here are duplicated centrioles which will migrate toward the opposite poles, just like here. These are migrated, and during this process
Nuclear envelopes start disintegrating, chromatin material condense to form chromosomes, and then centrioles start formation of mitotic apparatus. Look here carefully. There are three kind of spindle fibers: ester, non-kinetochore, and kinetochore. Look here for ester. These are radiated in the form of circular pattern. These are said to be ester. But look here for non-kinetochore. They are interdigitate with each other. They are interdigitate with each other, not attached with the centromere of chromosome, or we can say that they are not attached with the kinetochore region of chromosomes. A third kind of kinetochore spindle fibers which are attached with the kinetochore region of chromosome are said to be kinetochore spindle fibers. So these are three spindle fibers, and this is all about mitotic apparatus of karyokinesis. And inshallah, in the next video we will discuss about prophase, metaphase, anaphase, and telophase. This lecture is all about introduction of mitosis, stages of mitosis, and finally we are elaborating the karyokinesis. What is karyokinesis? Division of nucleus. It is the general introduction of karyokinesis. Inshallah, in the next video we will provide the information about the stages of karyokinesis. Thank you.